Hello bachcho. So let's see this question. The question says a 100-watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. So in the A part it asks what is the energy per photon associated with the sodium lamp. So अगर हम इसका पहले A part देखें बच्चों, तो in the A part it says what will be the energy per photon associated with the sodium light. So इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि सोडियम लाइट की वेवलेंथ क्या होती है. So in the question it is given the wavelength of the sodium light is equal to 589 नैनोमीटर. तो इसकी हमारी जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी hc over lambda k. We have to use this formula to get the energy per photon associated with the sodium light. So यहाँ से हमारी एनर्जी इक्वल आ जाएगी hc 6.62 into 10 raised to the power minus 34. This is the value of h, Planck's constant, multiplied by the value of the speed of light in vacuum, which is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, divided by lambda, the wavelength given in the question, which is 589 nanometer, which is 10 raised to the power minus 9 meters. So देखिए यहाँ से हमारी एनर्जी आ जाएगी बच्चों 3.37 into 10 raised to the power minus 19 joules. So to convert this energy from joules to electron volts, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.37 into 10 raised to the power minus 19 joules को डिवाइड करना पड़ेगा, बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से. So हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी आएगी दैट इज इक्विवेलेंट टू 2.11 electron volt. So this is the value of energy per photon associated with the sodium light. So we have done the A part here. अगर बच्चों हम इस क्वेश्चन का B part देखें, which says at what rate are the photons delivered to the sphere. So basically हमें rate of delivery of photons पूछता है to the sphere. So देखिए बच्चों, अगर हम इस B part को लिखें तो बच्चों the key point we have to use in this question is that the formula of power, which is power equals to number of photons times the energy divided by the time period, right, per unit time. So energy per unit time gives the value of power of the source. So बच्चों यहाँ से अगर हमारा per unit time है तो हमारे जो number of photons आएंगे that will be equal to power divided by energy. P here is the power of the source, and E here is the energy of photon, and N here is the number of photons with the energy E. तो देखिए बच्चों यहां से हमने प्रीवियसली निकाला कि जो हमारी एनर्जी थी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ पर फोटोन वाज 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स लिखें, पावर हमें गिवन है 100 वॉट्स, पर फोटोन की हमने एनर्जी निकाली 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 1.6 into 10 raised to the power minus 19. सो बच्चों अपॉन सॉल्विंग हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी दैट विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू, सो n विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 3 into 10 raised to the power 20 photons per second. सो पर यूनिट टाइम में हमारे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे फ्रॉम दिस 100 watt सोडियम लैम्प दैट विल बी इक्वल टू 3 into 10 raised to the power 20 photons per second. So this will be the final answer for this question. So I hope bachcho you understand this question well, and best of luck.